Sir, slide. Yeah. Yeah. So, good evening, everyone. Sir, देवेश सर. Yeah. या मैं सर मैं थोड़ा एक ओपनिंग कर देता हूँ सर, उसके बाद आप स्लाइड चला दीजिएगा. Please. Yes. Okay. Yeah, sir. Good evening, sir. Yeah, very good evening to all the eminent doctors. Thank you so much for joining us for the today's webinar. Our endeavor is to spread awareness about rabies, which is fatal but can be avoided once opportunely vaccinated. This is an initiative from Cadila through its innovation to serve the society and humankind. The topic of the webinar is dosage reduction strategy in rabies management, role of novel vaccine. Dear Doctor, Therabis is the world's first novel 3-dose anti-rabies vaccine. And with great pride, we would like to inform you that Therabis has successfully completed 1 year of launch with more than 40K annual wide victim being vaccinated. 100% compliance was recorded and no case of ADR was registered. With this, it is my honor to introduce to the speaker of today's webinar, Dr. Devesh Kumar, Associated Professor Community Medicine, RIPS Ranchi. Now I would like to request Dr. Devesh to initiate the talk, and later on we will have a question and session. All the participants can drop their question in the drawbacks, and we will read out all the question after the presentation. So, Dr. Devesh sir, please start, sir.
Yes, Devesh sir. Hello. Yes, Devesh sir. हाँ हेलो. जी जी, एक अब सेकेंड. मैं एक्चुअली सर हमको आई थिंक लगता है नेटवर्क इशू आ रहा है सर बार बार. मैं टेक सपोर्ट से जो है ना आपको स्लाइड चलवा दूं क्या सर? हाँ एक बार चलवा दीजिए. ठीक है, वो ज्यादा बेटर है. जी जी जी, क्योंकि मुझे तो कुछ लगता है कुछ सर ना कुछ. यस यस, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं सर, तो मैं टेक सपोर्ट से बात कर आपको हाँ स्लाइड. हाँ हाँ, तो बेटर है कि वो स्लाइड, हाँ उससे आप चलवा दीजिए. ओके. यस सर. आर्या बॉस. हाँ अशोक. आर्या सर, सर का हाँ. नेटवर्क लगता है बार बार इश्यू हो जा रहा है सर, तो टेक सपोर्ट से जो है शेयर करवा दीजिए ना सर. रिक्वेस्ट करके देख लो एक बार. ओके. यहाँ पे तो है सर, टेक सपोर्ट में तो है, रिप्लाई नहीं आ रहा टेक सपोर्ट की तरफ से. Hello, sir. Yes, yes. यस. जी 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 Yes, you're जी सर. audible. ओके ओके सर, प्लीज प्लीज जो है ना शेयर जो है ना स्लाइड को आप कर दीजिए ना. डॉक्टर देवेश सर का जो है ना नेटवर्क इशू आ जा रहा है. Okay, sir. 1 minute, please. ओके. या Can you hold? Hello, sir. We didn't have any slides, sir. So, यस, आवाज आ रही है सर? yes, sir. Sir, we didn't have any slides, so you have to share, sir. सर आपका वॉइस जो है ना क्लियर नहीं आ रहा है. Yes, sir. Sir, now you can hear me. या हियरिंग. Sir, we didn't have any slides, so sir, you have to share it. ओके. अशोक स्लाइड तुम चला सकते हो. कैन यू रन द स्लाइड? सर स्लाइड के लिए जो है ना नहीं हो पा रहा है सर. फ्रॉम टेक सपोर्ट व्हाट डू यू सजेस्ट? Sir, if you have any phone, connect with the phone and share with the phone, sir. From mobile phone it's tough to share the slides. It will be easier if someone having laptop, you can help us out from this situation or not? Sir, you can share with the ABM and ABM will share the slide. देवेश सर. हेलो. हम मैं भी ट्राई कर रहा हूँ. मैं दूसरा नेट कनेक्ट किया हूँ, देखता हूँ यदि मैं select कर पा रहा हूँ या नहीं. मैं एक बार शेयर करूँ क्या स्क्रीन? Sir, you can go. ओके. Are the slides visible? Yes, sir. The slides are visible. Yes, sir. Okay. Slides are visible. So, good evening, everyone, and sorry for the interruption. So today we will be talking about a bit about rabies diseases, animal bites incidences in India and world.
its epidemiology, evolution of rabies vaccine, challenges, unmet needs. So, and the introduction of the new novel technology or the TH rabies vaccine. Then we'll be discussing about two clinical studies which have been part of this, a launch of this vaccine. It's phase 2 and phase 3 clinical trial results, and then the takeaways way forward. So rabies is a zoonotic disease we all know. It is caused by rabies virus, which is encoded by 5 structural proteins: N, P, M, G protein, L protein. And the G protein is a major antigen in the formation of neutralizing antibodies against rabies virus. Globally, we have around 59,000 rabies deaths per year, and out of that, 20,000, around one third of the deaths is reported in India. Slide is around- not moving. Not moving. Slide is fixed. Slide is not moving, sir. Just a second. Are the slides moving? No, केवल पहला स्लाइड ही है अभी लगा हुआ. पहला ही स्लाइड लगा हुआ है. ये क्या हो गया? नेक्स्ट स्लाइड सर कीजिए ना, नेक्स्ट स्लाइड. अरे बहुत, मैं तो 5th स्लाइड पे हूँ. ओके, लेकिन यहाँ पर सर सिर्फ पहला ही दिख रहा है. एक जी यस यस आ गया सर. ऊपर का. Yes, yes. तो हाँ, मुझे समझ चेंज में हुआ है. कुछ Change वर्जन में, हुआ है. हाँ कुछ वर्जन में क्या होता है, जब स्लाइड शो करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम आती है. तो मैं पूरे फुल स्लाइड शो नहीं करूंगा, ठीक है. ओके ओके मैं इसी मोड में करता हूँ. ठीक. ओके फाइन. ओके सर स्टार्ट. So as you all know that rabies disease is a zoonotic disease, and it is caused by rabies virus, which is encoded by 5 structural proteins, namely N, M, P, L protein and G protein. The G protein is a major antigen in the formation of neutralizing antibodies against rabies virus. Talking about its epidemiology, globally around 59,000 rabies deaths are estimated per year, and out of that 20,000 rabies deaths, that is one third of the total deaths, occur in India. 91% of the deaths occur in rural areas where we may have, there is always a scarcity of vaccine or the right management in rural and remote areas. So we have to be very particular about it, and advocacy should go on to the highest level so that the vaccine is there in the remotest of remote places. We all know rabies is 100% fatal, except 1 or 2 or around 10 cases may have been saved by different methods, but it's 100% fatal. And we also know that it is totally vaccine preventable disease. So vaccine should be educated in each and every animal bite. So how did the rabies vaccine evolve? So since 1885, rabies vaccine came into being, and there was non-standardized diet preparation, and it was a nervous tissue vaccine, which by after 20 years, 25 years, this actually
injections decreased to 14 injection. Initially, it was 31 injections, and with the 0.5 ml daily dose. Then by 1975-76, inactivated vaccine cell culture came into being, and standardized immunogenicity lyophilized vaccines were available. Now there were 5 injections around. Some vaccines were of 0.5 ml and some 1 ml, and the dose was 0, 3, 7, 14, and 28 days. So this is how the vaccines have evolved from neural tissue vaccines to non-neural to cell culture based vaccines, and now the era is of recombinant DNA protein vaccines. So what are the current challenges now? Current rabies vaccines are cell culture vaccines. Their inactivated vaccines are more than 50 years old technology. They are inconsistent in potency. Its stability, short supply, and adverse events are again a question mark. So, and that's why there is decrease compliance beyond 3 injections. Generally, we see that 0, 3, 7 people take, and after that, either the healthcare provider is not interested, or even the beneficiary doesn't come up to take the further doses. So compliance is a big issue in earlier vaccines. So now the current challenges, again, you can see that decreased compliance beyond 3 injections, in 4 injections and 5 injections. If you consider intradermal, then 4 injections are given, and in intravascular 5 injections. So the compliance is a major, non-compliance is a major issue, in getting fully vaccinated against the rabies vaccine, rabies disease. So meeting the unmet medical need, we are here to discuss and so the TH rabies vaccine, it's a first protein subunit vaccine prepared by VLP platform technology, and this vaccine is actually has come up with 3-dose intramuscular regimen, that is 037, and due to this 3-dose regimen, will have better compliance, and due to easy to follow flow regimen and less visits, it will be convenient to use, ready to use, and no reconstitution needed. Again, this is a major advantage in this vaccine, that this is not a reconstituted vaccine. So VLP, talking about VLP technology, a native virus is there. G protein is difficult to stabilize. G protein isolation using VLP technology. It has been done by Cadila Pharmaceutical Limited, and then these virus-like protein particles or protein complexes exist as nanoparticles, and this is, VLP technology. If you see that the recent vaccine manufacturers against the RSV and even the COVID, this VLP technology has come up. VLPs are very similar to native virus particles, but that do not contain the actual viral genome. They do not replicate, but can mimic viral antigenicity without being pathogenic. So they are capable of introducing a strong humoral and cellular immune response. And so here we are with the VLPs as vaccines. Talking about VLP technology vaccine, actually, Dr. Sumit Poddar et al. Has published an original research article regarding this, regarding novel recombinant rabies G protein vaccine, a VLP based rabies vaccine. It was published in AppCry journal in volume 22.
So the clinical phase 2, the study design was such that Rabipur vaccine, Rabipur vaccine 10 milligram 0 to 3, 2 dose and 3 dose. And you can see the seroprotection data that at the end of after 90 days, it's almost all the doses of the vaccine in 2 dose and 3 dose. It's nearly almost 100% seroprotection, and then it actually decreased in 180th day in 2 dose 2 dose regimen at on day 180, and on day 270. I mean 2 dose and 3 dose that also decreased. So, but again, it's more than 80% after day 270. So, clinical study phase 3 trial was also done in India with Ravish et al. It was published in Human Vaccine and Immunotherapeutics. So its result again, total subjects were 800, and randomization was done 2:1, and it was done to evaluate the immunogenicity and safety of rabies G protein vaccine administered as a simulated post-exposure immunization in healthy volunteers. So the study design was to demonstrate non-inferiority of the test vaccine to the comparator vaccine. Primary objective was subjects with seroprotection at 14 days post first dose, that is seroprotection RBNA titer more than 0.5 IU per ml. Secondary objective was subjects with seroprotection at day 42 post first dose of test vaccine. Safety by monitoring subjects with adverse events, and the protection was obtained by vaccine. So if you see the results, so on in safety, if you see the Rabipur has got more adverse event than the novel vaccine, and if you see the seroprotection on day 14 and 42, so on day 14, the novel vaccine has performed better. It is around 99% seroprotection as compared to the reference vaccine, that is 97%. On the day 42, it was comparable, 98 and 100% respectively with the novel and the reference vaccine. If you see the local adverse event and the systemic adverse events, the reference vaccine is having more adverse event as compared to the novel vaccine. By safety, if you see the novel vaccine is better than the reference vaccine, and efficacy almost it is comparable to the reference vaccine. So the conclusion is the novel vaccine THR rabies was non-inferior to reference vaccine. It has less adverse effects compared to reference vaccine, and novel 3-dose TH rabies was found to be safe and immunogenic, and was compared to 5 doses of WHO pre-qualified vaccine, which is a modified Thai regimen approved by WHO. So, considering this novel vaccine, will have more compliance, less side effects, and the efficacy is almost comparable to the reference vaccines available in the market now. So
So that's all from my side. Thank you. And Kerala has got some laurels this year. Golden Blue Tigers Award, Malaysia for Innovative Product of the Year, and Pharma Innovation of the Year by the Economic Times. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Sir, Dr. Mithilesh, sir. So that's all from my side. Any question from audience side? Thank you, Dr. Devesh. Any question from audience? There is no any question. Dr. Mithilesh, sir. Yeah. Yeah, sir. Any question, sir? Yes, sir. आपको कुछ पूछना है? क्वेश्चन तो ऑडियंस से पूछेगा ना. ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है? सर आप तो पूछना नहीं चाहते हैं. हम क्या क्वेश्चन पूछें? ऑडियंस को यदि क्वेश्चन क्या है आपका तो क्या कमेंट है सर? सर आपका कोई कमेंट सर ये 3 डोज 4 डोज और 5 डोज रिवीज वैक्सीन पे क्या लगता है? नहीं, एक क्वेश्चन है, इसमें डोज नहीं दिया कि कितना वॉल्यूम देना है. सर 0.5 ml ही है जहाँ तक हम देखे हैं अभी. 0.5 ml था कहीं पे मैंने देखा था. इट इज इंट्रामस्कुलर तो है, 3 डोज है. इंट्रामस्कुलर, हाँ यस सर, इंट्रामस्कुलर. सो अगेन 1 ml वी आर 1 ml है कि 0.5 ml है? 0.5 ml मैं कहीं 0.5 ml है. 0.5 ml. Yes, it is 0.5. Okay. Now तो इससे तो ये पता चलता है कि वैक्सीन बेटर है, मतलब स्टडी भी हुआ है, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल हो चुका है ना. फेज 2 फेज 3 भी हो चुका है सर. फेज 3 ये डॉक्टर रवीश ने किया है. हाँ, और मल्टी सेंट्रिक था. मतलब वैक्सीन को टीएच रेवीज बोलते हैं या थ्रेविस बोलेंगे, क्या बोलते हैं? Travis. Yeah, Travis. ये टीएच क्यों रखे हैं इसका नाम? THRAPIS. Yes, हाँ? correct. थ्री के कारण. THRAPIS. अच्छा, नहीं मतलब ये TH3 का TH है क्या या फिर नहीं, कुछ और है? नहीं, इसमें ब्रांड जो लगा हुआ ब्रांड नेम है सर Travis, THRABIS, Travis. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सोच कर रखा गया होगा ये Travis TH मेरे ख्याल से 3 को तो नहीं वो डोनेट कर रहा है. हो सकता है इसमें भी. हाँ, ये सही बोल, ऐसा हो सकता है. 3 डोज है, TH हो सकता है. तो probably ये जब रख रहे होंगे तो वो Travis ये TH ये. हाँ, ठीक TH है, अच्छा हो गया, THR तक हो गया, और रिवीज में भी R तो वो मिला के जो है वो ट्रेविस कर दिया. नहीं, अभी मैं देख भी रहा था, अभी VLP टेक्नोलॉजी से काफी वैक्सीन आ रहे हैं. अभी वैक्सीन के बारे में पढ़ रहा था. रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस वैक्सीन वो भी हो सकता है कि इंडिया में आ जाए, तो वो भी VLP टेक्नोलॉजी पे. तो आजकल काफी VLP टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है. And always 3 dose is always compliance wise it's good. So Okay. Sir, one question, sir. What types of animal bites? Yes, sir. What types of animal bites cases you come across apart from dog bite? मंकी बाइट्स आते हैं, बियर बाइट्स आते हैं, कैट बाइट्स आते हैं. जनरली रैट बाइट से रिवीज होने के चांसेस बहुत कम है. तो हम लोग जब तक वाइल्ड रैट नहीं होते हैं तो हम लोग नहीं बोलते हैं लेने के लिए. बट अगेन लेने में कोई दिक्कत नहीं है. इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड. ओके. सो यही है. इवन ह्यूमन बाइट्स बहुत कम चांसेस है कि रिवीज होगा, बट या होने के लिए कभी भी हो सकता है. सो जनरली डॉग बाइट्स और मंकी बाइट्स ही आते हैं. कुछ फॉक्स और जैकल बाइट्स आ जाते हैं. अदरवाइज
यही दोनों ज्यादा कॉमन है, कुछ कैट बाइट्स रहते हैं। ओके, तो सर ये साइन Tick ऑफ bite सिम्टम्स also. क्या ऑफ ह्यूमंस के लिए? साइन कैसे साइन रिपीट द एंड क्वेश्चन? सिम्टम्स। Sign and symptoms, generally hydrophobia is the most cardinal sign जब रेबीज मैनिफेस्ट करेगा तो, बट अगेन 99% ऑफ द 99% ऑफ द टाइम आई मीन अनडायग्नोज चला जाता है, बट जब मैनिफेस्ट करेगा तो हाइड्रोफोबिया इज द मोस्ट कार्डिनल साइन, एंड देन उसके बाद फिर बल्बर पैल्सी और फर्दर सीक्वेल हो जाता है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन सर, सपोज दैट बाइक अगर स्क्रैच करता है, डॉग बाइट से अगर स्क्रैच होता है और ब्लीडिंग नहीं आता है, तो उस केस में क्या है, मतलब ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बहुत ये आई मीन ये कहना कि स्क्रैच हुआ है और ब्लीडिंग नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं एब्रेजन स्किन का जो लेयर है मतलब उसमें कहीं ना कहीं ब्रीच आया होगा, और उस केस में यदि इवन द सीरियस फ्लूइड हैज कम, देन वी हैव टू गो फॉर वैक्सीन। वी एक शुड और, गो फॉर वैक्सीन। हाँ, एब्रेजन है, scratch without oozing of blood comes under the category 2 of WHO जो कैटेगराइजेशन है वाइट, तो उसमें तो वैक्सीन लेना ही है, 2-3 में वैक्सीन लेना लेना है, ही है, 1 बिल्कुल में केवल बिल्कुल नहीं बिल्कुल लेना है, लेना है। कैटेगरी 1 में नहीं लेना है। 1 लीक इन Yes. अनअब्रेडेड स्किन है, इन दैट केस यू लीव इट वैक्सीन। विदाउट यूजिंग ऑफ ब्लड भी यदि स्क्रैचेस है तो बिल्कुल लेना है, वो कैटेगरी 2 में आएगा। हाँ, उसमें इम्यूनोग्लोबिन इज नॉट एडवोकेटेड। A scratch with oozing of blood, that is the transdermal bite and it comes under the category 3 bite. उसमें तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी साथ में लेना है with vaccine. ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू। या और कोई क्वेश्चन अशोक जी? नो 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 सर, नो सर। हाँ, तो अच्छा, एक मिनट, ये जो 3 डोज है 037 ना, जस्ट, या 03 and 7। और साइट ऑफ वो तो वही है, डेल्टॉइड में ही देना है। यस सर। ठीक है, आई थिंक छोटा बच्चा सभी होगा तो सर फिर एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ एंट्रोलैटरल था, यस बिलो जब 5 इयर्स, छोटा होगा 2 साल 3 साल। यस सर। 5 साल के नीचे थाई में दे सकते हैं, एंट्रोलैटरल थाई। Yes sir. So thank you so much Dr. Devesh sir for the informative talk. We truly appreciate your efforts. Last but not the least, we would like to inform you that Travis we won the 2 prestigious awards in the innovation category. So thank you Dr. Devesh sir and Dr. Mithilesh sir. So thank you very much sir. Thank you. Thank you, Mr. Ashok. Thank you for the giving me opportunity to talk on this very important topic and this novel vaccine. And thanks a lot. Thank you sir. Have a nice day sir. Oh. कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं सर? अभी तो हजारीबाग नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। लौट रहे रांची के लिए। ठीक है, आप और अकेले हैं कि और भी कोई है? हाँ, एक डॉक्टर साहब हैं, यहीं से जाते हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक है, लीजिए। तो आप लोग का एग्जाम हो गया है क्या? बचा हुआ है? ओके, बाय। कुछ बचा हुआ था तो डॉक्टर प्रभात देख रहे थे, अब ये भी करना था तो डॉक्टर प्रभात मेरे साथ थे तो वो देख रहे थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके।